Good morning, students. Today we will discuss about fifth class mathematics subject. In this, we will start our first chapter, that is large number. In this chapter, we will discuss about the Indian number system and international number systems. In this, we will discuss about the Indian place value charts and international place value charts. International system of numeration and the international place value charts. So we will discuss all about these. You have to solve exercise 1.1 on your notebook. So these are the question. Write the following in the short form. ये आपको short form में लिखना था. आप इसको किस तरीके से लिखोगे? 4 1 2 1 7 90. You have to add 90,000 plus 9 lakh. Sorry, 9 lakh plus 70,000 plus 1,000 plus 200 plus 10 plus 4. That will be equal to 9 lakh 71,214. These are the short form, and we will call this form as a expanded form. We will call this form as a expanded form. So you have to write expanded form in a short form by this method. So you have to solve these questions on your notebook. Now we will look at the next topic, that is the place value and face value of a digits. So what is the place value and face value of a digit? The place value of a digit depend on the position of the digit in the number. जब भी हम कोई नंबर लेते हैं तो उसमें किस पोजीशन पे है डिजिट्स, तो उस पर डिपेंड करती है हमारी प्लेस वैल्यू. ऑलवेज रिमेंबर दैट द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरोस. फेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन ए नंबर इज द डिजिट इटसेल्फ. in the number face value is digit, it has itself whatever place is occupied in the place value charts. So the place value of a digit in a number, place value of a digit, we have if we have to find place value of a digit, so we will multiply the face value into the value of the place it occupy in the place value charts. Now we will discuss one example, that is find the place value place value of all digits in the numerals. So इस numbers की हमें क्या करनी है, सारे numbers की सारे digits की हमें क्या निकालनी है, place value निकालनी है. So we will write a table. We will first write digits. These digits that are the 4, 8, 3, 2, 7, 5, 1, 9 and 6. There is 6. Here it is 6. So these are the digits, and now we have to find face value and place value of these digits in this numeral. Now we have to find place value and face value of these digits. So first of all we will find face value of these digits. So these digits also are a face value of digits. These are the face value. 4 का फेस वैल्यू क्या रहेगा, 4, 8 का 8, 3 का 3, 2 का 2, 7 का 7, 5 का 5, 1 का 1, 9 का 9 और 6 का 6. तो हमारे फेस वैल्यू चेंज नहीं होंगे किसी भी डिजिट्स की. ओके, नाउ वी विल फाइंड द प्लेस वैल्यू. नाउ व्हाट वी विल डू, प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू में वैल्यू ऑफ प्लेस इट ऑक्यूपाई इन द प्लेस वैल्यू चार्ट्स. सो वी विल फर्स्ट राइट कॉमास इन दिस नंबर, दैट इज इंडियन नंबर सिस्टम में अगर कॉमास को यूज करना है तो हमें पहले 3 प्लेसेस, उसके बाद में 2, उसके बाद में 2. So what is the value of this is 48 crore 32 lakh 75,196. It is the value of this numeral. Now we have to find place value of 4. That is the value of place of the digit is 10 crore because it is the 48 crore, then 10 crore, then 4 will be multiplied by 10 crore, that is equal to 40 crore. That will be equal to 40 crore. Now 8 digits, its face value is this. We have to find its place value. Then its 8 place value. 8 place value will be 1 crore because it is present at the 1 crore place. So 8 into में 1 crore, 8 crore is the place value of digit 8. Now
इसी तरीके से हम और डिजिट्स की निकालेंगे, जैसे 3 प्लेस वैल्यू इज 3 एंड प्लेस वैल्यू, दिस इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 3 है और प्लेस वैल्यू हमारी कितने पे है, ये 10 लाख प्लेस पे है, 10 लाख प्लेस पे है, देन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 लाख की, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 30 लाख। इसी तरीके से हम डिजिट 2 की निकालेंगे, डिजिट 2 इज एट फेस वैल्यू इज 2 एंड it is present at the 1 lakh place value, it is present at the 1 lakh place value, then 2 multiply 1 lakh, that is equal to 2 lakh। so इसी तरीके से हम सारे डिजिट्स की इनके मतलब जो फेस वैल्यूज हैं उनको उनके प्लेस वैल्यूज के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 7 की प्लेस वैल्यू 10,000 है, 7 की मल्टीप्लाई 10,000 के साथ 70,000, उसके बाद में 5 is at 1,000 place, then 5 multiply 1,000, that is equal to 5,000। next is the 1 is at 100 place, then 1 into 100 100। now next is the 9 is at 10th place, then 9 into 10 is 90। now 6 that is at a 1st place, then 6 into 1 that is equal to 6। so by this method, by using this table, we can find all the numeral all numerals have we will find all numeral have place value and face value। तो इस तरीके से हम टेबल्स का यूज करके हम किसी भी न्यूमेरल्स की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू उनके डिजिट्स की क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो दिस इज द today's lecture। now you have to write you have to solve first question, you have to solve second question, so this is your homework, you have to solve these questions on your notebook and learn about how we will find the place value and face value in a number। so this is the end of your lecture, thank you।